My next topic is about the formation of trigerminal layer, that is also called gastrulation. So what is gastrulation? Gastrulation, that is called conversion of bilaminar disc into trilaminar germ layer. So how so now we can discuss how the formation of trilaminar germ layer is formed. First of all, in previous class we discussed how a cytotrophoblast and its two types, sensation trophoblast and inner side are the cytotrophoblast, in between the amniotic cavity, amniotic blast cells, and two types of cells, and the yolk sac, that one are the columnar cells, these are cuboidal cells, these are called epiblast, hypoblast, that one is the amniotic cavity, that one is the yolk sac, and that one is this extra embryonic coelomic cavity. And now how we can discuss how the formation of trilaminar disc is formed. So first we draw the columnar cells, these are cuboidal cells, above is the amniotic cavity and below will be the yolk sac. So that one is the precordial plate, in the center, in the caudal end of the amniotic cavity or in the epiblast, there is a proliferation of cell in the center. Proliferation of cell, सेंटर में सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, सेंटर में सेल प्रोलिफरेशन होती है, देन they move in vertical directions and at the end they form a circular node like structure that is called the primitive node, and a streak is formed that start its proliferation from the caudal end and move in vertical directions. A streak is formed that is called primitive streak, and the circular end is called primitive node. From these structures, cells from that one is called the primitive streak, primitive node, precordial plate. Cells from the epiblast move downward in the primitive node, and in the primitive streak a central cavity is formed that is called primitive groove, and in this node, primitive node, a cavity is formed that is called primitive pit. एक सेंटर में सेल की प्रोलिफरेशन होती है जो वर्टिकल मूव करती है, और जो स्ट्रीक सेंटर में मूव करती है इसे हम कहते हैं वर्टिकली, इसे कहते हैं हम प्रिमिटिव स्ट्रीक, एंड जो सर्कुलर नोड बनता है इसे कहते हैं प्रिमिटिव नोड। फिर इस नोड में से सेल डिजेनरेट होते हैं और इस सेंट्रल कैविटी ऑफ प्रिमिटिव स्टीक में से भी सेल डिजेनरेट होते हैं एंड फॉर्म करते हैं प्रिमिटिव ग्रूव
in the primitive streak, and in the primitive node, primitive pit is formed. So next step will be the proliferation of cells epiblast that move in from in the direction of through this primitive group. They move downward and backward. ये इस तरफ सेल प्रोलिफरेट करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, जिससे एक लेयर बनती है सेल्स की, और जो हाइपोब्लास्ट होती है वो डिजेनरेट हो जाती है और न्यू लेयर ऑफ सेल बनती हैं। इससे सेल प्रोलिफरेट करते हैं। सेल इस प्रिमिटिव ग्रुप की तरफ क्यों प्रोलिफरेट करते हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ होते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, और कुछ साइटोकाइनिन्स होते हैं एंड कुछ ल्यूकोट्रीन्स होते हैं, जो द मूवमेंट ऑफ एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ एपिब्लास्ट टुवर्ड दीज प्रिमिटिव ग्रूव, ये प्रिमिटिव ग्रूव की तरफ सेल को मूव करवाता है ताकि सेल्स इसी में से गुजरे और मूव डाउनवर्ड एंड लेटरली एंड बैकवर्ड, और ये फॉर्म करते हैं हमारी एक लेयर जिसे हम कहते हैं एंडोडर्म। जो नीचे हाइपोब्लास्ट होती है वो डिजेनरेट हो जाती है और उसके ऊपर लेयर बनती है जिसे हम कहते हैं एंडोडर्म। फिर बाद में जब एंडोडर्म बन जाती हैं तो कुछ सेल और फ्रॉम दी एपिब्लास्ट मूव करते हैं, इसी से इधर से मूव करते हैं थ्रू द प्रिमिटिव ग्रूव, और ये बिटवीन दी एंडोडर्म एंड द डेवलपिंग एपिब्लास्ट ये सेल इधर आके प्रोलिफरेट करते हैं और इसे हम कहते हैं मेसोडर्म। So cells endoderm and mesoderm is formed through the cells proliferation from the epiblast, and the upper layer is called the ectoderm. एपिब्लास्ट सबसे पहले तो एक वर्टिकल बनता है प्रिमिटिव स्टीक, फिर बनता है नोड, फिर इसमें से जो सेंट्रल सेल होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं और प्रिमिटिव ग्रुप बनता है और प्रिमिटिव नोड बनता है। प्रिमिटिव नोड से बनती हमारी, वो बाद में डिस्कस करूँगा, उसमें बनती हमारी नोटोकार्डियल प्लेट बनती है, नोटोकार्डियल कैनाल बनती है। जब यहाँ से सेल प्रोलिफरेट करते हैं तो पहले बनाते हैं हमारी एंडोडर्म जो बनती है एपिब्लास्ट से, देन बनती है सेकंड वन इज़ द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल थ्रू द ग्रूव एंड फॉर्म द मेसोडर्म, ये भी बनती है एपिब्लास्ट से। फिर कुछ सेल होते हैं जो ये 3 लेयर बन गई, एंडोडर्म, ectoderm, and the central layer is called the mesoderm. ये होगी एम्नियोटिक कैविटी। कुछ ये बनती है हमारे पास स्ट्रीक बनती है, प्रिमिटिव ग्रूव, ये प्रिमिटिव नोड, और ये हमारे होता है प्रिकॉर्डियल प्लेट। सो सेल्स फ्रॉम द प्रिमिटिव ग्रूव बनाते हैं हमारी एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, बट जो सेल होते हैं हमारे इससे प्रिमिटिव नोड ये मूव करते हैं थ्रू द प्रिमिटिव नोड और बैक तरफ मूव करते हैं, बैक साइड पे अप टू प्रिकॉर्डियल प्लेट, और ये बनाते हैं जी, ये हमारा हो गया प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव पिट, ये प्रिमिटिव ग्रूव, ये होगी हमारी प्रिकॉर्डियल प्लेट। सेल्स यहाँ से इंटर होते हैं और मूव बैकवर्ड मूव करते हैं अप टू आवर प्रिकॉर्डियल प्लेट, दैट इज कॉल्ड द नोटोकार्डियल कैनाल। हाउ the notocardial is formed from the primitive pit, node pit, and the
from the primitive groove, epiblast and hypoblast cells can move through this primitive groove and form the endoderm and the mesoderm. Then from the primitive node and primitive pit, nodal pit, cell move backward up to the precordial plate that are involved in the formation of notocardial plate. Then in the next step, हमारी होगी प्रीकॉर्डियल प्लेट, ये नोटोकॉर्ड, primitive node, notochord, cell move backward. then ये हो गई हमारी एंडोड्रम, मेसोड्रम, सेल यहाँ से मूव करते हैं थ्रू बैकवर्ड एंड मूव टूवर्ड द प्रीकॉर्डियल प्लेट। कुछ सेल और सेल आगे की तरफ कम जाते हैं और पीछे की तरफ इस तरह मूव करते हैं। जब इस तरह मूव करते हैं कुछ सेल आगे की तरफ, और जो फ्लो होता है इनका बैक की तरफ होता है, इस तरह ये पीछे की तरफ मूव करते हैं। डैट और इन द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो मेसोडर्म होती है, एक तो इस पॉइंट पे नहीं प्रेजेंट होती, प्रीकॉर्डियल प्लेट पे मेसोडर्म नहीं होती, ये इसे कहते हैं स्फेलिक एंड। और एक हमारा होता है इधर कॉर्डल एंड और कोलाइकल प्लेट, नो मेसोडर्म, ओनली एंडोडर्म प्लस एक्टोडर्म। और एक कैरी होता है ये हमारा नोटोकॉर्डियल प्लेट, नो मेसोडर्म, लाइक यू कैन ड्रॉ। ये हमारा हो गया नोटोकॉर्ड, ये हमारा हो गया प्रीकॉर्डियल प्लेट, एंड दैट वन इज the canal, that is called the notochordal canal. That one is the groove, that is the primitive groove and notochordal node. Cell from that move backward and form the notochord. Below is the layer that is called the endoderm. फिर कुछ सेल होते हैं नोटोकॉर्डियल किनाल के, वो अटैच्ड होते हैं हमारी इससे, दीज आर अटैच्ड विद दी आवर एंडोडर्म लेयर, और इसकी डिजेनरेशन होती है, सेल डिजेनरेट होते हैं, एंड दैट फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन दी एमनियोटिक कैविटी एंड द यॉक सैक। जो एंडोडर्म लेयर होती है ये हमारी डेवलप करती है जीआईटी सिस्टम, हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का सारा पार्ट जो बनता है वो बनता है इससे एंडोडर्म से। जो ऊपर वाला होती है एक्टोडर्म, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमारी सेंट्रल सिस्टम की इंफॉर्मेशन में हेल्प करती है, और इसे कहते हैं जो फॉर्मेशन होती है कनेक्शन बिटवीन दी एमनियोटिक कैविटी एंड यॉक सैक। इसके ऊपर होती है एमनियोटिक कैविटी, बिलो होता है यॉक सैक, दैट इज कॉल्ड दी neuroenteric canal, that is formed by the attachment of notochordial membrane and the endoderm layer that will degenerate and that create a space that form the formation of connection, जो formation connection बनाता है between the amniotic cavity and the yolk sac. And next I will draw the developing, ये हो गया vertical, then I will draw
ये हमारा नोटोकॉर्डल किनाल हो गई, ये एपीब्लास्ट, नाउ इट्स कॉल्ड द एक्टोडर्म, that one the endoderm, and between is the mesoderm. Mesoderm is absent at the end, at the caulical plate and at the precordial plate and at the area of our notochord. There is no formation of endoderm, mesoderm in those areas, only 3. Then it will degenerate and form a layer that is called the notochordial plate, and it will degenerate also, and that one and also generate and the formation of cavity between the amniotic and form of connection between the amniotic cavity and yolk sac. It form the notochordial plate. Then it will attach, in the next step it will attach with the our endoderm and form a connection between them, and that one is the mesoderm. Then it will lose, in next step it will lose its connection, notochordial plate lost its connection with the endoderm and form a definitive notochordial plate. That one is the epiblast, endoderm, now the our definitive notochord is formed, and the cells in that area will degenerate and form the endoderm. That area will degenerate and form the endoderm. Here is the mesoderm, and that's the formation of our definitive notochord. Notochord is involved in the formation of a neural tube, and its remnants are present between the vertebrae. That is called, these are vertebrae, and between the vertebrae is present the disc that is formed by the upper layer and lower layer, that is called the nucleus pulposus and nucleus fibrosus. That one is fibrosis layer, and in between in the center is present the nucleus pulposus. That is the remnant of notochordial plate. That is our definitive notochord. These are the remnant of that is present between the vertebrae. Nucleus pulposus is the remnant of our notochord, definitive notochord. And that's end of my lecture on formation of trigerminal layers.